Good morning, students. It is lecture 6 of chapter 5 for the class 11 CBSE and RBSE. Okay. In previous lecture, we have discussed about the kinetic theory of gases and various types of velocities like root mean square velocity, average velocity, probable velocity. Okay. Today we will discuss the deviation of a gas, deviation from ideal behavior. Okay, what does it mean? We know that all gases obey this equation. This equation is the ideal gas equation. So we say that Charles law, Boyle's law, Avogadro, Gay-Lussac, all laws, according to all laws given by scientists for those gases which obey this equation. Okay, but ideal gas is a hypothetical gas. In fact, the gases are real. What are real gases? Real gases are those gases which obey ideal gas at high temperature and low pressure. क्या मतलब है कि real gases are those gases which obey ideal gas equation at high temperature and lower pressure. Okay. So gases deviate from ideal behavior. So deviation from ideal behavior is given by Z. It is a compressibility factor. It is a compressibility factor. And represented by PV equals to nRT. Okay, and it is okay, and we know PV equals to nRT if we, in this equation, it is for ideal gas. So I replace this nRT by this, so it becomes ideal. By putting this value in this equation, we can form this. So it is real. So what is Z actually? Z is V real upon V ideal. So compressibility factor is the ratio of volume of real gas to volume of ideal gas, or we can say this. Okay. So there are so many gases. So there are three conditions. If number one, if V real is greater than V ideal. यदि रियल ग्रेटर होगा आइडियल से, then Z will be greater than 1. Okay. If V real is less than V ideal, then if ideal is greater than, then Z will be less than 1. Okay. And if V real is equal to V ideal, then Z will be equal to 1. Okay. If Z is equal to 1, gas V real and V ideal, there is no difference in the volume. So there is no real, no ideal. All gases are ideal. Okay. So there is no deviation. But if Z is greater than 1 and Z is less than 1, in both cases, gas deviates. Okay.
Clear? So what is Z? Z is the compressibility factor which define the deviation from ideal behavior. Deviation of a gas, we can say deviation of a gas from ideal behavior. कि एक गैस जो है वो ideally behave, एक गैस हम देखकर तो मालूम ही नहीं कर सकते, we can't tell that it is a real gas or it is an ideal gas because there is no ideal gas. It is a hypothetical gas. All gases are real, but there are the conditions. If the value of Z is 1, in that case the volume is same for ideal and real. Then there is no deviation and gas behave as such. But if V real is greater than or V real is less than, in both the cases Z may be more than 1, may be less than 1, and gas deviates from ideal behavior. And gas deviates from ideal behavior, it means gas is real. Okay? First thing is, so it is clear. Now come to the second point. So first point is this. First point, what is compressibility factor? Second point, this. And now come to the third point. Third point tells about if V real is greater than V ideal. जितना आइडियल का वॉल्यूम होना चाहिए था, द वॉल्यूम जितना किसी भी गैस का वॉल्यूम होना चाहिए था, इफ वॉल्यूम इज मोर देन दैट, यदि वॉल्यूम उससे ज्यादा आता है, एक गैस को इतना, एक गैस जो है वो इतने वॉल्यूम में होनी चाहिए थी लेकिन वो इससे ज्यादा वॉल्यूम, देखिए इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि इफ वी ड्रॉ ए कर्व बिटवीन P एंड V, ओके, इट कर्व शुड बी लाइक दिस अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, ओके, बट सो इट इज a curve for ideal gas, and but in fact curve is like this, curve is like this. So you see at low pressure, pressure is increasing in this way. So at low pressure what we see, so this curve is of real gas. If for certain pressure, we find that curve is like this, okay. So in that case what happens ki if volume is more than, in this case real gas has volume more than ideal, so gas is expanded. So if gas is expanded here, what we can say that in first case gas is expanded, okay, in first case gas is expanded because V real is greater than, and it means Z is positive. More than 1 means Z is positive. So this deviation is positive deviation. Okay, and it occurs when repulsion forces are greater. When repulsion forces are greater. Clear? If in second situation, if ideal gas volume is more than real, so gas is contracted, or we can say Z is negative. So it is a negative type of deviation in which attraction force is stronger. So we have 3 type of conditions, and if we draw a curve between Z and P, we find that there are some gases like hydrogen and helium which on increasing pressure they show positive deviation. These gases are hydrogen and helium. Okay, as we increase pressure from starting
On increasing pressure, we find that the compressibility factor increases. But there are some gases which show at a low pressure, which show curve like this, and like this. So in these gases, at a low pressure, curve gases show low. So curve is like this. At low pressure, we find that deviation is at a low pressure, but at high pressure it is positive. Okay? And if we plot a curve between Z and P for various gases at a different temperature, we find that curve is like this. It is T1. It is like it is T2 and it is T3. Here T1 is greater than T2 is greater than T3. If we draw a curve between Z and P, compressibility factor and pressure for various temperatures, where T1 is, if T1 is less than T2 and T2 is less than T3, or we can say T3 is greater than. So as we increase the temperature, जैसे हम temperature को increase करते हैं, curve or the gas or the curve show less deviation. Means it is curve for T1, it is for T2, it is for T3. So the deviation is this. It is a deviation. कि यहाँ पर डेविएशन ज्यादा था, इसके लिए उससे कम है और इसके लिए और भी कम है. तो as we increase the temperature, deviation becomes less. Okay? Now come to the topic van der Waals gas equation. Okay? As we know that there is no ideal gas, all gases are. So, in kinetic theory of gases, there are two postulates. दो postulates कौन से थे? First postulate था कि the volume of gas is negligible in comparison to volume of gas. Now come to the van der Waals gas equation. This equation is P plus AN square upon V square, V minus NV equals to RT. Okay? It is pressure correction and it is volume correction. Okay? We know that in kinetic theory of gases, there are two postulates. One, volume of gas molecule is negligible in comparison to actual volume of gas or the total volume of gas we can say. Okay? And second point is there is no force of attraction. No force of attraction exists between gases.
between gases क्या है कि जब हमने इसको स्टार्ट किया था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में ये माना गया था कि किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है, अभी आप सबसे पहले ये देखेंगे कि हम किस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इज गिवन एट दैट टाइम व्हेन ऑल गैसेस ओबे आइडियल गैस इक्वेशन। इट मीन्स कि वहां पर क्या माना गया था, वहां पर यह माना गया था कि जो आइडियल गैस है वो कैसी है, इट्स ए पॉइंट चार्ज। देखिए कैसी है, इट्स ए पॉइंट चार्ज। आइडियल गैस के बारे में बोला गया था, क्या बोला गया था कि जो आइडियल गैस है इट इज, जो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स है उन्हें क्या माना गया था, पॉइंट चार्ज माना गया था। पॉइंट चार्ज का मतलब वो बहुत ही छोटे छोटे हैं, ठीक है। तो उस टाइम पर ये माना गया था कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल है दैट इज नेग्लिजिबल, मींस गैसियस मॉलिक्यूल हैज नो वॉल्यूम, ओके, in comparison to the actual volume of gas, and actual volume of gas is the volume of container। गैस का जो एक्चुअल वॉल्यूम क्या था, जो कंटेनर का वॉल्यूम है दैट इज द वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल, ओके। और ये माना गया था कि देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब पार्टिकल्स कैसे हैं, गैस की मॉलिक्यूल कैसे हैं, पॉइंट चार्ज है तो इनके बीच में देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता। वॉन डेर वाल ने क्या कहा, वॉन डेर वाल ने कहा क्या, वॉन डेर वाल ने कहा कि गैसेस, उसने कहा कि गैसेस कैसी होती है, रियल होती है, ठीक है। एंड ही अज्यूम गैस एज ए रिजिड स्फीयर। सबसे अजम्पशन क्या है, गैसेस, तो उसने रिजिड स्फीयर माना, इसने पॉइंट चार्ज माना, उसने रिजिड स्फीयर माना। इसका मतलब ये रिजिड स्फीयर है और रियल गैसेस जो है वो एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, इस पर ही गैसेस, इस पर ही आइडियल गैस की तरह बिहेव करती हैं। कैसे बिहेव करती हैं, आइडियल गैस की तरह बिहेव करती हैं, अदरवाइज दे बिहेव एज ए रियल गैसेस, ठीक है। तो उसने कहा कि क्या होता है कि गैस का कुछ ना कुछ गैस molecule has volume, gas molecule has volume and hence and has force of attraction okay, so there is some force of attraction. For example, we can understand this way. For example, it's a container, there are molecules, okay, ये गैस, ये कंटेनर है in which gas is filled and this molecule, and we know that the molecule collide with each other and collide with wall also and exert a pressure। मॉलिक्यूल जो है वो आपस में भी कोलाइड करते हैं, बॉल से भी कोलाइड करते रहते हैं, भाई ये इससे कर रहा है, 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 एंड बॉल से भी कोलाइड करते हैं, एक्सर्ट अ प्रेशर। तो ये मॉलिक्यूल है, दिस मॉलिक्यूल व्हेन कोलाइड विद द वॉल ऑफ कंटेनर एंड एक्सर्ट अ प्रेशर, दैट प्रेशर इज PI। हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कहा था कि पार्टिकल्स जो है, एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, वो कोलाइड करते हैं और प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, तो वो प्रेशर को एक्सर्ट कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि जो रियल गैसेस, यहाँ पर ये कंसेप्ट लगता है कि वॉन डेर वाल ने क्या कहा कि गैसेस हैज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। द बैक मॉलिक्यूल और द मॉलिक्यूल्स which are away from this front molecule pull this molecule towards itself। जो पीछे के मॉलिक्यूल्स हैं ये इस मॉलिक्यूल को अपनी ओर पुल करते हैं। पुल कब करेंगे, जब देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो उस केस में क्या होता है कि उस केस में जो ये पुल करेंगे तो ये मॉलिक्यूल आगे उतने फोर्स से नहीं टकरा पाएगा, ठीक है, इट विल नॉट कोलाइड विद दैट फोर्स एंड so the pressure exerted by this molecule is less than, so the P real is less than P ideal, okay, be clear।
according to van der Waal, because molecule has force of attraction, so they pull so the back molecule pulls front molecule towards itself. As a result, front molecule collide with the wall of container with less pressure. Okay, so there is a need of pressure correction. What is this pressure correction? Pressure correction, so we can say the pressure correction is P plus P dash, where it is P ideal plus P correction is A n square upon V square, because this P dash is directly proportional to the density and n by V. So डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी भी n by v का होल स्क्वायर हो जाती है, and it becomes a n square upon v square. A is the van der Waal constant. A is the van der Waal constant, and the unit of this van der Waal constant is atmosphere liter square upon mole square. Okay, and volume correction is what is in kinetic theory of gases, we assume that the volume of gas molecule is negligible. Why? It is a container in which gas is filled. Okay, in kinetic theory of gases, ideal gas molecules are taken as a point charge. मतलब जो गैस के मॉलिक्यूल है उनको कैसा माना गया था? पॉइंट चार्ज के फॉर्म में माना गया था. तो इफ वी प्रेस द गैस, यदि हम प्रेस करते हैं गैस को, तो ये पूरे के पूरे मॉलिक्यूल्स क्या है, इतने से स्पेस में आ जाएंगे, क्योंकि इनका कोई खुद का वॉल्यूम ही नहीं है. तो इस पूरे कंटेनर के वॉल्यूम के कंपैरिजन में दिस वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल. इसलिए हमने क्या मान लिया था कि की आइडियल कि V आइडियल हमने क्या माना था? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर. हमने वॉल्यूम ऑफ कंटेनर मान लिया था, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर. ठीक है, बट van der Waal ने क्या कहा कि कब माना था? जब आइडियल गैस के मॉलिक्यूल कैसे हैं? पॉइंट चार्ज. लेकिन van der Waal has said that the gaseous molecules are rigid sphere. rigid sphere का मतलब वो बड़े बड़े होते हैं, रिजिड होते हैं, लाइक दिस. तो व्हेन वी compress these molecules, they will occupy some space like this. जब हम इसको compress करेंगे तो it will occupy some space. So the actual volume is, so what is the volume of a gas? Volume of a gas is the free space occupied by molecule. That is V. Okay, so in that case, what will be the volume according to van der Waal? If a single molecule has volume B, n mole molecule has volume NB, it will be V minus NB. So this NB is the excluded volume. This volume is excluded volume. Okay, so it is our volume correction. Okay, so what will be B? N is the mole, B is the volume, and B is the van der Waal constant. B is the van der Waal constant, and the unit of B is liter per mole. Okay, so van der Waal gas equation is for the real gases, in which
Van der Waal assumed that gas has volume, it has a force of attraction, and gas molecule obey ideal gas equation only at high temperature and low pressure, and gaseous molecules are, real gaseous molecules are rigid sphere. Okay, thank you.